Assalamu alaikum everyone, this is Sabahat and I'm here in my live session. So let me just go on Facebook and check who's live with me. And in the meantime, those of you who are watching me, do let me know where you are logging from, whether you're from Pakistan, whether you're from any other district or province of Pakistan. So just let me know in the comment box. And I'm just going to go on Facebook and come back in a jiffy. Okay, so I'm checking out if I can see myself live over here, because I can see myself live over here where I'm talking to you at the moment, not on Facebook at the moment. So let's see. Yeah, now I can see. Okay, so I can see myself there as well. And in the meantime, those of you who can guess what I plan to talk about, though the title's very clear and it's very obvious what I plan to talk about. So you can just let me know, what do you think this topic is going to be about? Partly it does say it's about something, but then you can always let me know. Okay, so आज तो मैंने बात भी शुरू नहीं की और मुझे पहले ही इमोजीज आने शुरू हो गए हैं. Well, that's good. So I can see people who are coming and watching, and yes, Salisha, I can see you. Okay, and I hope you're fine. Okay, thank you for your compliment. It's I can see that as well. Okay, right. So today's topic now. In the previous few days, there are many people who are contacting me regarding spoken skills, and there are some people whom I'm also giving classes regarding spoken skills. But my focus is always on the thing that whatever I do or whatever I deliver, it should affect a lot of people. The impact should be great, and many people should benefit from it, rather than one or two, or just a focus group. They should avail that opportunity. So that's why I decided that today I want to discuss something regarding spoken skills. And spoken skills, it's whenever we talk about spoken skills, it's not just one element, or it's not just one component which we call speaking. Rather, there are three other components जिनको आप साथ मिलाते हैं तो spoken skills बनती है. And that is that is your writing skill, that is your reading skill, and that is your listening skill, and even spoken skill. So everyone deals it differently. Like, there are many people, like when people are taking the IELTS examinations or even the TOEFL examination, so usme jo hai, everyone is focusing on there are some people who have strength in one particular area components, because there are four components. There's the listening skill, there's the speaking skill, then there's reading, and there is writing. So ये जो चारों components हैं, ये मिलाकर IELTS बनता है. But then again, अगर हम regular routine में जो है लोगों को देखते हैं, तो उनका कोई एक आधा एरिया ज़्यादा स्ट्रांग होता है और दूसरे एरिया कंपैरेटिवली वीक होते हैं. सो व्हाट दे डू इज़, वो इस चीज़ से घबरा जाते हैं कि भाई हमने स्पोकन करनी है, तो वाई शुड वी इवन थिंक अबाउट अदर एरियाज. बट द फैक्चुअल थिंग इज़, एंड द रियलिटी इज़, कि विदाउट इन तीन कंपोनेंट्स को, जिसमें लिसनिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, इनके बगैर आप स्पोकन स्किल्स पे कंसंट्रेट नहीं कर सकते, एंड यू कैन नॉट ए स्पोकन स्किल्स. क्योंकि क्या वजह है? वजह ये है कि स्पोकन स्किल इट्स अ ब्लेंड ऑफ नॉट ओनली दीज थ्री स्किल्स, बल्कि इसमें एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है, दैट इज़ योर ग्रामर. सो इफ़ यू आर नॉट regarding your you're not good in your grammar, या आपको एटलीस्ट बेसिक्स नहीं आती, तो you won't be able to speak spoken skills professionally. So that's why whoever whoever I mentor, I try to focus on the grammatical element and the other skills as well. So apparently in the beginning, yes, थोड़ा सा जो है it would be difficult, but as you ace it and as you go along,
the concepts, everything is going to be easier for you. So आज जो है basically spoken skills रखने का क्या मतलब है? I want to share certain tips. Now in every field there is a different level of spoken skills. So I'm going to discuss different industry related different industries, different professions, and I'm going to tell you tips कि वहाँ पर जो है how you can integrate spoken skills और वहाँ पर किस किस्म की spoken skills की आपको requirement होती है. Okay, let me just read your comments and then I can proceed further. Iqbal Zarkash, thank you so much for joining and watching. And Alicia, you're saying okay, you like my dress. No, I'm not angry. My face doesn't look angry. Actually the thing is that I got up very early in the morning, and since the CIE examinations have started, so I had children who were appearing for the CIEs. So since morning I was with them, and then I came back around 4:30, 5 o'clock, and then I had to take a spoken skills class which was at 6 p.m. and then after 2 hours break, but in between I was cooking food as well, because from morning till evening I was on the road with my children, and so when I came back I had to cook food as well. So अभी जो है सेशन में स्टार्ट होने से पहले जो है मैं कुकिंग को फाइनलाइज करके आई हूँ. So you might think I'm angry, but I'm not angry. I might be tired. So when you're tired तो वो आपके फेस से जो है ऑटोमेटिकली जो है शो हो जाता है. So otherwise nothing is wrong. I'm not angry at all. And when I'm taking these sessions I'm very active and I'm very happy, because I like taking these sessions and I like imparting knowledge, and I like when people learn something good from me. So that's the thing. So don't you think कि I'm angry. I'm not angry. अच्छा, now I plan to talk about different industries, और उसमें जो है आप स्पोकन स्किल्स किस तरह इनकलकेट कर सकते हैं, या वो जो फील्ड्स हैं उनमें स्पोकन स्किल्स या किस किस्म की स्पोकन स्किल्स की रिक्वायरमेंट है. सो अगर हम जो है लाइक दोज ऑफ यू हु आर इनटू कस्टमर सर्विस या डिटेल सर्विस में है, तो आपको यू माइट बी नोइंग कि भाई वहाँ पर किस किस्म की स्पोकन स्किल्स रिक्वायर होती हैं. लाइक व्हेन यू आर a customer, or you are not a customer, when you are in customer service or you are a retailer or in retail service, you focus on active listening. And active listening क्या है कि you are you are paying attention to whatever the customer is saying, so you're listening to him or her actively, so you can address their problems. That is called active listening. And active listening वो आप किसी भी एरिया में अपनी लाइफ की जो है अप्लाई कर सकते हैं. यू हैव टू लिसन केयरफुली वॉट एवर द पर्सन इज सेइंग, चाहे वो जो है डिटेल में है, चाहे वो जो है एजुकेशन इंडस्ट्री में, चाहे वो टीचर के रोल में है, चाहे वो जो है स्टूडेंट दे हैव टू लिसन टू ईच अनदर actively as well. So when you are listening to your customers and you're listening to them very attentively and with detail, then you're able to address their problems, या जो भी उनकी needs हैं आप उनको उस तरीके से address कर सकते हैं if you are actively listening. अगर आप listening इस तरह कर रहे होंगे भाई कस्टमर बोल रहा है और आप जो है एक आंसर सुन रहे हैं दूसरे से नकार रहे हैं, तो then it's not a good customer service at all. rather उसमें क्या होगा, उसमें कस्टमर भी बदजन हो जाएगा और आपको भी होगा कि बस अब ये जाए, मेरा दिमाग काफ़ी खा लिया है. So this is not the way customer services don't work like this. You have to be at the highest of your ethics. Only then जो है you'll be able to satisfy the customer, and the customer would be satisfied with your product or service, whatever you're offering. So this is one thing, active listening. And Jan Mohammed वालेकुम अस्सलाम. And another thing is empathy training. अब empathy training में भी यही है कि you need to teach the employees empathy through tone of voice. अब when you are speaking, तो आप देखेंगे different situation में आपकी tones different है. Like if you're talking to students and you are explaining them some kind of concepts, तो आपकी जो tone है वो थोड़ी जो है ज़्यादा confident होगी. Students might think कि भाई वो जो है थोड़ी stern है, but rather than it's not stern, it's that you're emphasizing on what you are teaching. So that is the emphasizing tone. So similarly जो है जब आप customer से बात कर रहे होते हैं तो आपकी जो tones हैं वो उसके मुताबिक differ करती हैं. Empathetic is not कि भाई आप sympathize कर रहे हैं,
Empathetic is when you're showing consideration and you're considerate towards your customer, और उसमें जो आपकी tone है वो उसके मुताबिक होगी. Like if the customer says okay, like customers most of the time they address you very respectfully most of the time, but then again कुछ ऐसे भी customers होते हैं जो बहुत ही बदतमीजी से बात करते हैं, but still उनकी बदतमीजी के बावजूद that does not mean you are going to just leave your customer service etiquettes. You are rather going to treat them respectfully and you are going to ask them, sir, madam, how may I help you, what is wrong, how can I address your query. So you have to be empathetic towards whatever their complaint is. Ma'am Parveen, thank you so much for joining and watching this session. So this is regarding empathy training, and then this training it's a must. आपके employees जो है किसी भी फील्ड में हो, आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक रखते हो, you have to impart these trainings to your employees. So this is an asset. अगर जो है आपके employees they have this empathy training and they have this attitude towards dealing other people. Now I'll give you the example of the CIE examinations जिस जगह पे हो रही हैं. Overall जो है यानी with the candidates, क्योंकि candidates को जो है British Council they are dealing with them directly. So overall the attitude of the staff it's very cordial, but then again जहाँ पर conduct कर रही है और जिस जगह इन्होंने exams रखे हुए जिन marquees में, उधर जो है जो staff है, not the direct staff but yes the guards and this kind of staff, they don't have good etiquettes at all. और then वो उनकी जो है जो behavior है, जो उनकी tones है, उससे पता चल जाता है. So if you want your organization to succeed you need to train your employees as well. So this is one thing. क्योंकि आज मैंने जो है वो पूरा दिन मैं उधर थी, तो this is what I was observing and then I thought why not tell you people and share with you my experiences. So this is an asset. अगर आप अपने जो staff को उस basis पे train करते हैं कि they should show empathy towards the clients या towards the customers या whoever is coming. इस सिनेरियो में तो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स की रिलेशनशिप है ना, स्टूडेंट्स आर बीइंग dealt with by the British Council, so उनका तो जो है कोई नहीं है, but then again if the parents are being dealt by the staff and the lower staff and the behavior is very rude, so this is a direct it affects the reputation of the employees. So as an employee you need to take care of these things कि empathy training आपने देनी है अपने employees को. अच्छा, then उसमें जो है again जो है there should be clear communication. Like in customer service, if the communication is lagging or like there is distance and gap between what is being said and what is being interpreted, so ये चीज़ें भी बहुत मैटर करती हैं. और even spoken skills में भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं. If your communication is not clear, like if what I want to communicate, if I'm not clear in that, तो then उसका result क्या होगा? उसका result ये होगा कि you'll end up being confused and you won't understand what I want to communicate or what I want to say. So I have to be very clear in my communication. Whatever I'm trying to impart, it should go directly to you and you should be able to understand what I'm saying. So clear communication, it's an asset and it matters in retail services as well. देन अगेन एक और जो चीज़ आ जाती है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दो आपको ये टर्म जो है डिफ़िकल्ट लगती होगी बट इट्स वेरी इजी. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन इज बेसिकली व्हेन यू आर फेस्ड विद अ प्रॉब्लम, हाउ यू सॉल्व दैट प्रॉब्लम, दैट इज when you come in terms with the resolution. That's basically solving the problem. So in customer service, if a customer comes with their problems and then you have to address their needs and you have to reach to some kind of resolution. Then again इसमें जो एक और जो चीज़ आ जाती है customer service में, that is regarding upselling and cross-selling. And in that you need to practice persuasive talking and communication. So the more persuasive you are, the more you'll be able to sell your product and your service. And this is very common, and this is a practice
और प्रैक्टिस से आपको कोई भी चीज़ आ जाती है, इवन दो यू डोंट हैव दोज डिटेलर्स एक्सपीरियंसेस या कस्टमर सर्विस आपका एक्सपीरियंस नहीं होता, if you're not an MBA or if you do not have a degree, but then when you are in the field you can learn anything. And upscaling and cross-selling and selling products, it's not difficult. You just have to understand what your customer is looking for. You have to understand the psychology of the buyer, and according to that you just shape your sentences, and you form such sentences, and आपकी जो conversation is so productive, persuasive. Like आपने अक्सर देखा होगा कि when you go to a clothing store, so और ये भी नहीं है कि you're going to the big brands or anything like that. Even जो basic होते हैं, जो shops होते हैं, shopkeepers होते हैं, you might have noticed this कि बाज़ दफ़ा आप जाते हैं तो there is a particular sentence which the shopkeeper says, like on जैसे आप एंटर हुए तो वो आपको कहेंगे कि आए बाजी ये पढ़े लिखे कपड़े ले लें. So you'll be just taken back. What did the shopkeeper just said? But this, this caption, पढ़े लिखे कपड़े. So it's a persuasive way of, attracting the customer. So ये जो है attraction and persuasively आप किस तरीके से करते हो, these sentences, you can, just jot down some of the sentences. You can, get it written from someone, and you can learn these sentences. And when you're in the field तो आपको वैसे ही बहुत सी चीज़ें फील्ड की आ जाती हैं जो शायद आपको, जिस तरह हम कहते हैं ना ट्रिक ऑफ द ट्रेड, या किसी के जो है कोई जिस तरह जो है ख़ानदानी जो है रेसिपीज़ होती हैं कि वो जो है अबाव अजदाद जनरेशन बाय जनरेशन जो है चलती आ रही है. सो इन द सेम वे व्हेन यू आर इनटू डिफरेंट फील्ड्स तो आपको ऑटोमेटिकली यू गेट टू नो दोज टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज, and then you apply it in your daily lives or your professional lives. Wahid Haider Shah, thank you so much for joining and watching this session. अच्छा, and then इसमें जो है this was regarding one industry के उसमें आप spoken skills किस तरह utilize कर सकते हैं. Then you can utilize it in as per sales and marketing, और sales and marketing में भी जो है then उसमें आपकी जो pitch है it has to be perfect. क्योंकि when you are going to focus on crafting a concise and compelling compelling pitches which is going to be tailored according to customers. यानी इस तरह नहीं होगा कि आपने एक पेज बनाई है लाइक जिस तरह क्लोथिंग में पढ़े लिखे कपड़े, इसी तरह सेल्स एंड मार्केटिंग में दिस इज ऑल्सो अ पेज कि ये बाजी पढ़े लिखे कपड़े ले लें या ये वाला जोड़ा ले लें, तो then they would come up with some kind of universal name, like you take this cloth and your neighbor Fatima or your neighbor Ghazala, she's going to be jealous, and then आप जो है एकदम यानी there can be many Fatmas, there can be many Ghazalas, और हो सकता है आप भी किसी फातिमा या गजाला को जानते हो, and they say कि you take this, तो वो वाली जो आपकी नेबर है वो jealous हो जाएगी. Well, now the times pretty much different, क्योंकि अब जो है people don't pay a heed कोई jealous हो रहा है या नहीं हो रहा है, as long as you are into your own self or you are into your goals, you really do not care कि कोई jealous हो रहा है या नहीं हो रहा, क्योंकि you have a different mindset, you have a different goal. But then there are people who are they feel very happy that the shopkeeper knew the name of the neighbor, and they would feel very proud about this, and then they would take that thing as well. So these are different pitches, और हर कस्टमर के लिए जो है now it is up to the mind of the seller कि वो उस कस्टमर को देखकर क्या पिच करता है या क्या पिच करती है. वैसे तो मोस्टली जो है शॉपकीपर्स में देयर आर मेन नॉट फीमेल, बट देन देयर आर शॉप्स Karachi, I would say it's very open regarding these selling for selling purposes, क्योंकि selling में वहाँ पर ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद है. Like I remember when I used to live in Karachi, there was this Hadri market or Hadri Chowk something, पर वहाँ पर जो है like practically in every second shop there was a woman who was selling different products. So women, they have great sense, sixth sense, and they can pitch really good.
सो इवन फॉर मैन दे ऑल्सो पिच गुड, क्योंकि देन वही चीज़ है कि कुछ चीज़ें जो है आपकी नेचर में होती हैं, कुछ चीज़ें आप लर्न करते हैं. सो द मोर गुड you are at analyzing the behavior of your customer or your client, you are able to give a more good pitch. So this is regarding sales and marketing. And then sales and marketing में you need to build rapport, क्योंकि जितनी ज़्यादा आपकी जो है अच्छी rapport होगी, उतने ज़्यादा आपके customers होंगे, आपके clients होंगे. So building rapport, so खैर building rapport is an it's a backbone of every business. आप किसी भी business में अगर आपकी rapport नहीं है, आपकी networking नहीं है, तो you won't be able to survive in that particular business or any business. And then अगर sales and marketing की बात करें, so storytelling matters a lot. If you have this gift of telling stories, like even you have a product, और उस प्रोडक्ट के पीछे आप एक पूरी स्टोरी घड़ लेते हैं. नाउ दिस इज दीज आर ऑल टेक्निक्स एंड दीज आर ऑल टिप्स जो कि आपको स्पोकन स्किल्स में काम आती हैं. सो इफ यू आर एबल टू एस दी स्किल्स, यू आर गोइंग टू एस एनी फील्ड. सो देर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आई से कि भाई आप जो है ये चीज़ कर लो तो जो है ये चीज़ आप जो है इसमें जो है चल जाएगी. सो दीज आर द टिप्स जो डिफरेंट स्किल्स में डिफरेंट इंडस्ट्रीज में यूटिलाइज होती हैं. एंड दीज ये चीज़ें जो है आपको किस तरह पता चलती हैं, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग इन दोज एरिया या व्हेन यू आर इंटरेक्टिंग विद दोज काइंड ऑफ पीपल. सो यू एग्जैक्टली नो कि भाई दिस इज द टर्मिनोलॉजी विच इज़ यूज इन दिस फील्ड, क्योंकि हर फील्ड की अपनी टर्मिनोलॉजी होती है. जो टर्मिनोलॉजी लिटरेचर की है वो उर्दू की नहीं हो सकती, यानी इंग्लिश लिटरेचर की टर्मिनोलॉजी डिफरेंट है, उर्दू की डिफरेंट है, क्योंकि जो टोन्स हैं, जो स्ट्रेसेस हैं, जो सिलेबल्स हैं, जो वॉवल्स हैं, जो कॉन्सोनेंट्स हैं, वो हर लैंग्वेज की डिफरेंट होती हैं. सो व्हेन यू आर स्टडिंग अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, ओनली देन यू विल बी एबल टू नो कि कौन सा आपने वॉवल किस लैंग्वेज में यूज़ करना है, किस लफ्स पे आपका जो है ज़्यादा जो है एम्फेसिस होना चाहिए, किस पे कम होना चाहिए. And these are all the things which come with time. You have to practice. So spoken skill, it's all about practicing. The more you practice, the more fine your spoken skills would become. Okay, then sales and marketing में यानी जहाँ पर हमने परफेक्ट पिच का जिक्र किया, रैपर बिल्डिंग का जिक्र किया, स्टोरी टेलिंग का जिक्र किया, देन इसमें जो है एक जो चीज़ है दैट इज़ यू नीड टू हैंडल ऑब्जेक्शंस एज वेल. क्योंकि अगर जो है और ऑब्जेक्शन यही है कि भाई कस्टमर के प्रॉब्लम्स हैं एंड हाउ यू एड्रेस देम, दैट इज़ हाउ यू आर गोइंग टू हैंडल द ऑब्जेक्शंस. एंड देन उसमें एक और जो चीज़ है सेलिंग में, नेगोशिएशन, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू नीड टू हैव दोज नेगोशिएशन स्किल्स टू, कि भाई अगर एक जो है प्राइस है एंड द कस्टमर इज ऑलवेज गोइंग टू टेल यू कि भाई अगर आपने 1000 की चीज़ रखी हुई है तो उसको 500 में दे दो. एंड देन यू हैव टू नेगोशिएट, यू हैव टू set a midpoint. And it mostly works for the simple reason कि जो prices लगी होती हैं उसमें negotiation का बहुत ज़्यादा जो है ना जगह होती है, क्योंकि कोई भी प्राइस इस तरीके से नहीं लगी होती कि भाई दैट इज़ द फाइनल प्राइस. दे नो कि भाई अगर ये like if someone is selling something for 2000, तो they would the shopkeepers would be exactly knowing कि भाई अगर ये 2000 में यानी 1000 भी लेस कर दें तो स्टिल जो है प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा है. सो दैट इज़ हाउ दे सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड दैट्स हाउ दे डू द मार्केटिंग. सो अगेन ये वो चीज़ें हैं जो आपको तब आती है व्हेन यू गेट इनटू द फील्ड. सो कोई भी चीज़ सीखने के लिए, कोई भी चीज़ प्रैक्टिस करने के लिए यू हैव टू बी इन द फील्ड, यू हैव टू स्टडी द कल्चर, यू हैव टू सी के मार्केट में what goes around, लोगों की क्या डीलिंग है, किस तरह होता है. And only then you will be able to do your work or do your job or even practice spoken skills. अच्छा, then अगर ये हो गया, that was regarding sales and marketing. अगर हम health care की बात करते हैं तो health care में भी again you need to have clear patient clear patient communication. Like when you're communicating with the patient, your communication, it should be very clear, it should be health oriented. आप patient के साथ जो भी बात करते हैं it should be regarding to that industry, क्योंकि हर इंडस्ट्री के जो jargons होते हैं, जो use of language है, it's totally different. So you have to address the patient according to that terminology. But then again you have to see
कि भाई आप जो भी इंफॉर्मेशन डिसमिनेट करें हैं पेशेंट को, वेदर द पेशेंट इज एबल टू अंडरस्टैंड दैट और नॉट। क्योंकि अभी जो प्रॉब्लम होता है कि बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ डॉक्टर साहब, जाहिर है डॉक्टर्स ने जो है एक लंबा अरसा जो है गुजारा है वो टर्मिनोलॉजीज पढ़ने में, अंडरस्टैंड करने में, एग्जाम्स दिए हैं, देन दे हैव बिकम अ डॉक्टर। बट देन even if you're a doctor, still you have to uh, bend yourself down to the patient's level। क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है ना कि पेशेंट को जो है हेल्थ केयर से रिलेटेड मालूमात हो। नाउ इट इज़ योर काम, इट इज़ योर वर्क, इट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप चीज़ों को ईजी करके पेशेंट को समझाएं। आप अगर जो है पेशेंट को कह देते हैं, लाइक पाकिस्तान में तो लाइक पेशेंट्स को बस कह देते हैं अगर किसी के कोई ऑपरेशन होना है तो डॉक्टर कह देंगे कि भाई आपका ये ऑपरेशन होना है। बट देन इन दी इन द आउटर वर्ल्ड, जो बाहर की कंट्रीज हैं, वहाँ पर पेशेंट को एक एक चीज़, लाइक अगर किसी की जो है हार्ट सर्जरी है, ना दैट्स प्रीटी स्केरी। वैसे मैं आपको बताती हूँ कि स्केरी किस तरह है कि वहाँ पर जो है डॉक्टर्स एक एक चीज़ का बताते हैं कि भाई ये हार्ट सर्जरी होनी है, इसमें जो है ये वाला आला भी डालेंगे, ये वाला आला भी डालेंगे। वो आपको सारा जो है ना वो टूल्स दिखाते हैं कि भाई ये टूल्स जो है ना हम यूज़ करेंगे आपका ये काम करने के लिए, आपकी ये सर्जरी करने के लिए। सो जिसने ऐसे नहीं मरना वो ऐसे मर जाए। बट एटलीस्ट चलो यहाँ पर डॉक्टर्स एटलीस्ट ये नहीं बताते कि भाई हम ये आले यूज़ करेंगे, वरना वाकई में जो है किसी का बीपी शूट अप कर जाएगा, किसी के हार्ट बीट अगर नहीं भी बंद होनी तो वो उस डर के मारे बंद हो जाएगी। सो दैट्स गुड कि कुछ जो है पोशीदा रखते हैं। बट देन अगेन जो टर्मिनोलॉजीज है या कोई भी ऑपरेशन किस नोयत का है या कितना जो है कितना मुश्किल है, कितना डेलिकेट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, दैट द डॉक्टर्स नीड टू एक्सप्लेन। So every field has its own, pros and cons, but then everyone has their responsibilities as well. And being a doctor, uh, it's quite a difficult responsibility when it comes to patients. So patient के साथ you have to be very open and you have to be able to bend according to the level of the patient, क्योंकि हर patient जो है पढ़ा लिखा नहीं हो सकता, हर एक की अपनी जो है मेंटल कैपेसिटी होगी। सो उसको उसके लेवल पे जाकर यू नीड टू एक्सप्लेन रादर देन कि आप उससे बदतमीजी शुरू कर दें। सो हेल्थ केयर, दिस इज रिगार्डिंग क्लियर पेशेंट कम्युनिकेशन। देन अगेन डॉक्टर का जो प्रोफेशन है, वन नीड्स टू हैव एम्पैथी एंड कंपैशन। अगर एम्पैथी और कंपैशन नहीं होगा तो फिर कोई डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। हर एक, क्योंकि यू नो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व सच डॉक्टर्स कि भाई दे माइट बी वेरी केपेबल एट एवरीथिंग, बट देन अगेन दे डोंट नो हाउ टू डील विद द पेशेंट। उनको पेशेंट के साथ भी डील करना नहीं आता, उनको अटेंडेंट्स के साथ भी डील करना नहीं आता है। एंड देन द वे दे आर बिहेविंग कि भाई दे start considering themselves as gods. And I know it's a very strong statement, but I have seen doctors, they behave as if कि भाई खुदा तो एग्जिस्ट नहीं करता पर वही खुदा है। सो दैट इज़ अ वेरी सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स एंड दैट इज़ वेरी रूड। क्योंकि पेशेंट तो जो घबराया होता है, अटेंडेंट्स भी घबराए होते हैं, जाहिर है उनका जो है लव वन होता है जो कि एट स्टेक होता है, और आप जो है लव वंस के साथ जो है इस तरह मिसबिहेव कर रहे होते हो बीइंग अ डॉक्टर। सो एज अ डॉक्टर अगर आप में एम्पैथी और कंपैशन नहीं है, देन डोंट बी अ डॉक्टर, एंड देन डोंट गो टू सच डॉक्टर्स जिनमें ना एम्पैथी है ना कंपैशन है। क्योंकि जिसमें एम्पैथी और कंपैशन नहीं होगा, तो आप ये सोच लें कि वो आपके लव वन के साथ क्या करेगा ऑन द ऑपरेशन टेबल। अच्छा, देन अगेन हेल्थ केयर के प्रोफेशन में एक्टिव लिसनिंग ऑल्सो काउंट्स अ लॉट, क्योंकि हर प्रोफेशन में एक्टिव लिसनिंग इज मस्ट। चाहे वो जो है आपके हेल्थ केयर का हो, सेल्स एंड मार्केटिंग का हो, प्रोडक्ट का हो, एजुकेशन का हो, कोई भी आपका सेक्टर, आपके पर्सनल जो रिलेशनशिप्स हैं उसमें भी अगर आप एक्टिवली नहीं सुन लें तो चीज़ें जो है रिजॉल्व नहीं होंगी, उल्टा जो है चीज़ें जो है कॉम्प्लिकेट होती जाएंगी, लड़ाइयाँ झगड़े ये शुरू हो जाएंगे। सो एक्टिव लिसनिंग इज़ अ मस्ट। एंड देन अगेन, जैसा मैंने आपको कहा कि हर पेशेंट जो है इज़ नॉट एजुकेटेड, सो वन नीड इन द हेल्थ केयर सेक्टर वन नीड्स टू एजुकेट रिगार्डिंग पेशेंट एजुकेशन। पेशेंट एजुकेशन में
जाहिर सी बात है पेशेंट की जो कैपेबिलिटी है उसके मुताबिक यू हैव टू बेंड डाउन, यू हैव टू मेक द पेशेंट अंडरस्टैंड कि भाई क्या चीज़ है, किस तरीके से है, एंड देन you have to let your employees you have to educate them कि there are different kind of patients. Some patients might be very good, some might be very soft hearted, some might be very rude, some might be very arrogant, some might be very very extrovert. Then there are other scenarios as well. कोई बहुत ज़्यादा ठरक patients भी होते हैं. Then they every kind of personality. So yeah, you have to teach your staff, healthcare staff के भी आपने किस तरीके से behave करना है. And there are examples of many good hospitals जहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से patient को deal करते हैं. यानी they just take the patient as they care for them, not as their loved ones, but behavior से आपको जो है पता चला होता है कि भाई they consider humans as humans and not as a slaughter or a scapegoat जिसको जो है ना कुर्बानी का बकरा बनाकर जो है ना ज़िबा करते हैं. So there are good doctors and there are good hospitals as well. अच्छा, so this is regarding patient education. And then in healthcare industry, team communication matters a lot क्योंकि for one patient there are तकरीबन जो है एक टीम होती है, 5 to 6 डॉक्टर्स उसमें होते हैं, देन एसोसिएट्स भी होते हैं, असिस्टेंट्स भी होते हैं, लर्निंग्स भी होते हैं, अप्रेंटिस भी होते हैं. सो देयर हैज़ टू बी अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द होल टीम. इस तरह नहीं होता कि भाई अगर एक डॉक्टर आ रहा है और उसकी जगह फिर दूसरा कोई जूनियर डॉक्टर आ रहा है तो दे डोंट नो कि भाई पेशेंट के जो है क्या हिस्ट्री है, पेशेंट के साथ क्या इश्यूज है. सो वन हैज़ टू be on the same page. So same page पे होने के लिए again communication matters a lot and इसमें spoken skills आ जाती हैं. And this is regarding health industry. अच्छा, अगर हम जो है okay Alicia, it's okay, you can wind up and you can go to sleep, no issues. Okay, so regarding the tech industry, you need even in tech industries you need to simplify the jargons. अब tech industries में जो है there are many kind of jargons, कुछ difficult jargons भी होते हैं. like हर एक जिस तरह सॉफ्टवेयर हाउसेज होते हैं उनके हर एक इंडस्ट्री के अपने जो है jargons होते हैं. so जितने जो है आप easily जो है jargons को पेश कर सकते हैं तो it is good for the readers एंड फॉर द कस्टमर्स एज वेल. क्योंकि अगर कस्टमर्स को जो है कोई बहुत मुश्किल जार्गन्स मिल जाएंगे रिगार्डिंग दैट पर्टिकुलर इंडस्ट्री तो उनको समझ नहीं आएंगे. सो मोस्टली जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज होती हैं या टेक इंडस्ट्रीज होती हैं दे ऑलवेज ट्राई कि भी उनके जो मैनुअल्स है इट्स ईजी टू कॉम्प्रीहेंड दोज मैनुअल्स एंड इट्स ईजिली रीडेबल टू एवरीवन. अदरवाइज अगर वो डिफिकल्ट होंगे तो देन डेफिनेटली एवरीवन इज गोइंग टू गो टू द टेक इंडस्ट्री या जो भी उनके जो है टेलीफोन नंबर होगा. सो वन वुड बी कॉन्टेक्टिंग देम कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस और इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है. बट नाउ ड्यू टू द फैसिलिटी ऑफ इंटरनेट एंड डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड AI, so everything has become so easy. You can just type in the word and you get answers regarding those difficult jargons. Okay, so but then again अगर tech industry की बात की जाए तो presentation skills they count a lot and you need to train your employees in presentation skills. क्योंकि अगर presentation skills नहीं होंगी तो you won't be able to give a visual presentation of the subject or the topic at hand. So the more good you are in presentation skills, the easier it's going to become to communicate to a larger audience what your product or what your service is about. And then फिर इसमें जो है collaborative communication आ जाती है. Collaborative communication is also regarding it deals with team communication. So the more good the team is with each another regarding collaborations and regarding if they are on the same page, it becomes easier. So spoken skills फिर इस तरीके से आपके काम आती हैं when you are collaborating with the whole team and with each another as well and everyone is on the same page. और देन उसमें जो है अगर collaborative communication होगी तो उसका रिजल्ट ये होगा कि as teams you will be able to solve challenges or whatever problems are coming at hand, you will be able to discuss them
at hand, और face to face आप discuss कर रहे होंगे, और collaboratively you'll be coming to some kind of decision and some kind of solution for a specific challenge. और देन इसी में जो है प्रॉब्लम सॉल्विंग कम्युनिकेशन भी आ जाती है. इसी तरीके से जब आप कम्युनिकेट कर रहे होती हैं तो कई प्रॉब्लम्स हैं जो आप रिजॉल्व कर देते हैं व्हेन यू आर डिस्कसिंग. और फिर इसमें जो है एक और जो चीज़ आ जाती है, that is regarding client interaction. When you are groomed in different industries, या different आपको जो है skills जो है सिखाई जा रही होती हैं या आपको impart की जा रही होती हैं, तो you exactly know कि आपका जो client at hand है आपने उसके साथ किस तरह interact करना है. Like a person in a healthcare won't be able to deal with a client in tech industry, क्योंकि tech is totally different and healthcare is totally different. So हर जो फील्ड है उसके अपने जार्गन्स हैं, उसके अपने मसले मसाइल हैं, उसके अपने सॉल्यूशंस हैं. सो फॉर दैट एवरीवन नीड्स टू बी familiar with the jargons of that particular industry. अच्छा, फिर जब हम this was regarding tech. अच्छा, अब हम जो है ना, जो लास्ट हम बात करेंगे ना, that is regarding education. Education में ना clarity and being concise, it's very important. Like you might be a PhD doctor, you might be a very highly high scholar, ठीक है, and everyone would appreciate, okay, this person is a highly valued scholar and इनकी इतनी knowledge and this and that. But then again, अगर जो है आप जो बात कर रही हैं उसमें clarity नहीं होगी, उसमें जो है precision नहीं होगी, whatever you are delivering, it's not going to be comprehensible, it's not going to be digestible, it's not going to be easy for the readers या for the ones जिनके लिए आप वो knowledge impart कर रही हैं, तो then आपकी उस डिग्री का और आपका डॉक्टर होने का कोई फ़ायदा नहीं होगा. Yes, on डिग्री तो वो बहुत अच्छा लगेगा, you are a PhD and you are a doctor, but when it comes to imparting or accessing that knowledge to people, it won't matter, cause then people won't be impressed. rather उनको ये होगा कि भाई हमें तो बात ही समझ नहीं आती, क्या बात कर रहे हैं, ये तो इसकी भी समझ नहीं आई, उसकी भी समझ नहीं आई. So clarity is very important in education. And then you need to when it comes to education, you need to have engagement techniques. आपकी जो techniques हैं, like for a psychology, for a counselor, I read this thing that any counselor, you are your own technique. So for a counselor, every counselor is their own technique. So in the same way, जो education है, education में भी you yourself are your technique. You have to come up with techniques which are engaging. Now you know your audience. If I am imparting some kind of education to you, and I am actually imparting, so I know what kind of audience you are, and how I have to keep you engaged, and what is that which you come for, and join my sessions, and what is that which you are taking take away with you. So these are the things which I know, and I prepare my sessions according to that, cause I know कि आपको जो है क्या चीज़ bother कर रही है, and what is that you are looking for. So ये जो चीज़ें होती हैं, these are called engagement techniques, how you are engaging your audience, and your audience are very really happy with what you are delivering. Then again जो है education में एक और जो चीज़ आ जाती है, feedback and assessment. That's also very necessary. So अगर जो है whatever you are imparting, if you're not getting back the feedback and you're not getting back the assessment, so you don't know where you're standing. So for that reason, that's why I tell you every time when I end the session कि भाई अगर आपको session समझ आया है तो do let me know through the emojis, so I understand कि भाई how much the session was clear to you people. So ये तो मैं अभी आपसे नहीं पूछूंगी क्योंकि I'm still in this section. जब मैं ख़त्म करूंगी तो yes, I'm going to ask this. But then again ये education की मैं बात कर रही हूँ. अच्छा, फिर education में education जो है ना, it's a 3 tier. उसमें जो है टीचर्स भी हैं, उसमें स्टूडेंट्स भी हैं, एंड देन उसमें पेरेंट्स भी हैं. सो पेरेंट कम्युनिकेशन इट्स अ मस्ट. सो वो इंस्टीट्यूशंस जो कि ये समझते हैं कि पेरेंट की कम्युनिकेशन इट डज नॉट मैटर, और ये सिर्फ जो है 2-way रिलेशनशिप है बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर, तो दैट या स्टूडेंट या स्कूल, तो इट डज नॉट वर्क लाइक दैट. क्योंकि
दिस इंस्टीट्यूशन, द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, इट्स अ पिरामिड, चाहे ये स्कूल के लेवल पे है, चाहे कॉलेज के लेवल पे है, चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे है, क्योंकि जब तक ये तीन जो मेन पिरामिड बना रहे हैं, जिसमें हमारे पेरेंट हैं, टीचर हैं और स्टूडेंट हैं, ये जब तक तीनों मिल के काम नहीं करेंगे तो जो आउटपुट है वो अच्छा नहीं होगा। और अगर एक भी जो है इसमें से इंग्रेडिएंट मिसिंग होगा तो देन वी नो कि भाई सफरिंग एंड पे कौन होगा। ऑब्वियसली सफरिंग एंड पे स्टूडेंट होंगे, क्योंकि उनको जो है ना वो प्रॉपर जो है नॉलेज डिलीवर इम्पार्ट हो रही होगी जिसकी उनको ज़रूरत है, और ना ही वो अपने गोल्स अचीव कर रहे होंगे, क्योंकि स्कूल कैन फैसिलिटेट द चाइल्ड एट अ सर्टेन लेवल जब तक वो स्कूल में है, बट देन आउटसाइड द स्कूल इट्स द पेरेंट्स हु नीड टू फैसिलिटेट द चाइल्ड। अब अगर आपका बच्चा किसी सब्जेक्ट में कमज़ोर है तो एक हद तक ही आपको टीचर एक्सप्लेन कर सकता है, बट देन अगेन इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पेरेंट्स टू सी कि भाई वो बच्चा जो है कहाँ पर गैप आ रहा है, आप उसके लिए क्या कर सकते हैं। डज ही नीड एनी काइंड ऑफ एक्स्ट्रा क्लासेस, तो आप उनको एक्स्ट्रा क्लासेस प्रोवाइड करें, एंड एज अ पेरेंट यू नीड टू फैसिलिटेट। बच्चों के लिए पेरेंट्स जो कुछ करते हैं वो आसान नहीं है, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी विच एवरी पेरेंट नीड्स टू डू। व्हेन वी वर चिल्ड्रन इट्स द सेम थिंग विच आवर पेरेंट्स डिड, एंड नाउ एज पेरेंट्स, नाउ वी आर पेरेंट्स, तो ये अब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वी शुड डू द सेम फॉर आवर चिल्ड्रन, एंड एवरी पेरेंट डज ट्राई टू डू देयर बेस्ट जितना वो कर सकते हैं। बट देन कुछ पेरेंट्स होते हैं दे डोंट नो कि भाई कहाँ जाना है, किस तरीके से अप्रोच करना है, एंड सो इट्स ऑलवेज बेस्ट कि इफ़ यू हैव पेरेंट्स, इफ़ यू लाइक योर चिल्ड्रन they are friends with other children and you know their parents, you can always communicate with those parents, what are they doing, what are the steps they're taking, and then you can always go to the school and you can tell them your concerns, क्योंकि वो schools जो कि parents के concerns address करते हैं, तो उनके जो बच्चे होते हैं दे आर एट अ मच मोर एडवांटेज एज कम्पेयर टू दोज चिल्ड्रन जो कि जो है ना स्कूल की उनको बैकिंग होती है ना पेरेंट्स की बैकिंग होती है। Okay, so this is regarding parent communication and then collaborative communication. As I said कि जब तक आप collaborate नहीं करेंगे, चाहे स्टूडेंट के लेवल पे हो, टीचर के लेवल पे हो, पेरेंट के लेवल पे हो, तब तक आपके मसाइल जो है हल नहीं होंगे। सो यू नीड टू कीप ऑन कोलैबोरेटिंग विद डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस एंड जिस तरह की पिरामिड बनता है। एंड देन जो स्पोकन स्किल्स होती है, यू नीड टू टेलर इट अकॉर्डिंग टू यूर स्पेसिफिक इंडस्ट्री, वट एवर यूर इंडस्ट्री इज़, आप उसके मुताबिक जो है अपनी स्पोकन स्किल्स को जो है टेलर करेंगे, एंड इट हैज़ टू बी अकॉर्डिंगली। और जब आप उस एरिया में उस स्पेसिफिक फील्ड में प्रैक्टिस करेंगे उन जार्गन्स को और बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो automatically you're going to become good in spoken skills. So this was all regarding today's topic, and now I would want you to let me know if today's topic was clear to you. And there's someone who's crying and sending me crying emojis, and why is that? आज का टॉपिक क्या क्लियर नहीं था? So why some okay, when I go offline, okay, thank you so much. So I can see those thumbs up and heart emojis too, but then there is someone who is continuously crying, so I have to go offline and check who is that person जो कि मुझे रोने वाले emojis भेज रहा था। And now if there's anyone who wants to come live on camera, so I can take you live on camera. Okay. Vahid Haider Shah, how are you? It's long time. You have joined the session after quite some time. Okay. Okay, you know what? I was thinking tomorrow I'm going to take off. Tomorrow is Friday. And from next week, I'll be having these sessions from Monday till Thursday. Cause अभी जो है बीच में CIE के चूँकि एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए हैं, so I don't know how much time I'm going to be on the road, and then it's it's a rushy road जहाँ पर centers बने हुए हैं, so I might take time getting back home and then coming live for these sessions. So probably from Monday till Thursday I'll do the sessions, and on Friday, Saturday, Sunday I won't be having the sessions. Only I'll just be having the spoken classes
क्योंकि जिन लोगों के साथ मैंने कमिटमेंट की हुई है स्पोकन क्लासेस की, आई हैव टू टेक दोज क्लासेस. बट अदर देन दैट ऐसे ही जो है सिलसिला चलता रहेगा. एंड इन द मॉर्निंग यू विल बी लुकिंग एट माई डिफरेंट पोस्ट, even either in the form of vlogging or just post or just reels. So see you inshallah, see you on Monday. And till then अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, और जो बच्चे CIE दे रहे हैं उन्हें भी याद रखिएगा. सो इंशाल्लाह आप लोगों से मंडे को मुलाकात होगी. टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.